So we are going to start the third exercise, the unit circle. Use a reference triangle to evaluate secant 11 pi by 6 can be written as cos. Okay, warm up number 2 is sine 30 is equal to 1 by 2 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 2. Okay, so what is ASTC rule? ASTC rule means in the first quadrant all are positive, second quadrant sine is positive, third quadrant tan is positive, and fourth quadrant cos is positive. If cos is positive in fourth quadrant, it means it's negative in all other three. Tan is positive in third quadrant, it's negative in all other three. Sine is positive in second quadrant, it is negative in all other three. And in first quadrant, everyone is positive. In quadrant 1, sine theta is positive. So it means in first quadrant, everyone is positive. In second quadrant, what we have is CAST, cast. Okay, in quadrant number 2, sine theta is positive and L's are negative. Quadrant number 3, tan theta is positive, rest are negative. Quadrant number 4, cos theta is positive, rest are negative. Okay, the unit circle is a circle centered at the origin with radius 1. It is called unit circle because its radius is 1 unit. Every triangle that is created for an angle in the standard position on the unit circle will have hypotenuse 1. So if we draw a circle with radius 1, it is called a unit circle, and every triangle that will draw in the unit circle will have hypotenuse 1 because hypotenuse will be actually the radius of the triangle. Okay, so building the unit circle. Now let's make the hypotenuse equal to 1. So making the hypotenuse equal to 1, we will divide by 2. For making this unit circle equal to hypotenuse equal to 1, we will divide by square root 2. Power of unit circle. Identify the coordinates where the unit circle intersects the terminal arm of an angle allows us to simplify the trigonometric ratios. So cos theta is equal to x over 1, sine theta is equal to y by 1, and tan theta is equal to y by x, which is the slope. You can generate entire unit circle if you know the first quadrant and the ASTC rule. So what is the first quadrant rule? It's 1 0 square root 3 by 2 1 by 2. Okay, this is 30 degrees and this is a triangle with 90-degree. Now this is 45 degrees. The first coordinate represents cos theta, next represents sine theta. So its cos theta is 1, sine theta is 0. Here cos theta is 0, sine is 1. In between it's 3 by square root 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2 square root opposite. And for 45 degrees it's going to be same, square root 2 by 2, square root 2 by 2. So remember, for 30 degrees, square root 3 by 2, 1 by 2, cos theta, sine theta.
and for 60 degrees it would be opposite 1 by 2 square root 3 by 2. ठीक है, cos थीटा sin थीटा ऑपोजिट हो जाएंगे 30 और 60 के लिए, और 45 के लिए हमेशा स्क्वायर रूट 2 बाई 2 रहेंगे, 0 के लिए 1 0 और 90 के लिए 0 1. Quadrant angles on the unit circle. The angles whose measure are a multiple of 90 degree have terminal sides on the axis. This can be confusing because the terminal side is not in one quadrant but rather on a border between the quadrants. Cos theta is equal to x sin theta y and tan theta y by x. But remember, so we are going to fill this using the unit circle. So we know, हमें याद हो गया, it's 1 0, it's square root 3 by 2 and 1 by 2, it's 1 by 2 and square root 3 by 2, and it's square root 2 by 2 and square root 2 by 2 because it's 45 degree and it's 0 1. 90 तक हमें याद हो गया. तो ये था हमारा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़. ये हम याद कर रहे हैं वैल्यूज़ कि हमें विदाउट कैलकुलेटर याद थी हूँ. अच्छा, अब इस साइड पे क्या होगा, इट्स -1 0, so it's minus square root 3 by 2 1 by 2, so it's going to be minus 1 by 2 square root 3 by 2, and here it will remain same just by changing the sign. अच्छा, नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1, ऐसे साइन चेंज होगा अब. So it's going to be -1 by 2 minus square root 3 by 2, like दोनों साइंस नेगेटिव हो जाएंगे इसमें बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होती हैं. फोर्थ में क्या होता है, अगेन फोर्थ में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है. सो एक्स वुड बी, फर्स्ट वन वुड बी पॉजिटिव 1 by 2 minus 3 by 2. साइंस का आपने ख्याल रखना है जैसे एक्स वाई का होता है. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फर्स्ट वन हैं ये भी पॉजिटिव हैं, सेकंड वन है ये भी पॉजिटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए फर्स्ट वाले सारे नेगेटिव हैं, सेकंड वाले सारे पॉजिटिव हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, सो दोनों नेगेटिव हैं. फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है, इसलिए बाद में वाला वाई वाला नेगेटिव है, एक्स वाला पॉजिटिव है. अच्छा, अब हमें टैन थीटा नहीं लिखा, हमें साइन और कोस तो पता चल गया, बट नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट टैन थीटा. सो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा. सो 0 by 1 इज इक्वल टू 0, 1 by 2 divided by square root 3 by 2 will give you 1 by square root 3 which is equal to square root 3 by 3. रैशनलाइज कर लेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा. स्क्वायर रूट 3 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा. और ये सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज 1/0 की कोई फॉर्म नहीं होती. Okay, determine the coordinates of the point where the terminal arm of the angle theta lies in the standard position intersect. अच्छा, अगर 120 डिग्री होगा, so it is going to be on when sine is -1 by 2.
45 डिग्री बच गया। 45 डिग्री ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब 45 डिग्री होगा तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। 270 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आता था हमारे पास 0 - 1। ओके, let theta be an angle in the standard position in which quadrant or quadrants can theta be located under the given conditions. Sin theta and tan theta have same sign. Sin theta लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा, और cos साइन, अब देखो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ यहाँ यहाँ। cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ, तो फोर्थ आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा के ऑपोजिट साइन हो, यानी कि साइन थीटा अगर 2 और 4 में होंगे ऑपोजिट साइन, कॉट थीटा और सेकंड थीटा के ऑपोजिट साइन हो, so it's going to be 3 and 4. साइन थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो, कॉस थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो, तो सेकंड में ही आएगा। tan थीटा ग्रेटर देन 0 और cosecant लेस देन 0 हो। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब नाउ वी कैन डू देम इजीली, क्योंकि हमें पता है कि π/6 की क्या वैल्यूज़ हैं। ऑपोजिट कर सकते हैं सिंपली। कॉसिकेंट का नहीं पता, साइन का फाइंड करके उसको ऑपोजिट कर दो। Find two angles, one in clockwise direction and other in the counterclockwise direction, that are coterminal of the following. So simple coterminal find करने के लिए प्लस माइनस 360 डिग्रीज करेंगे। So we are just going to do plus minus 360. माइनस 360 डिग्री क्या होगा, इसमें हम करेंगे प्लस माइनस 2 पाई। ओके, फाइंड द रेफरेंस एंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। 7 π/6 है तो इसका π/6 होगा। 180 में से माइनस कर देंगे, π/3 होगा। इसको डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री टू रेडियन में मल्टीप्लाई बाय π/80 होता है। Okay, so degree to radian, we're just going to multiply by π/180. In which quadrant does the terminal side of each of the angle lies? Draw each angle theta in the standard position.
Use a unit circle to determine the exact values for each of the following. Sin pi by 3. Okay. Thank you so much. Thank you for watching the video. Must subscribe the channel and share it. Thank you so much. Jazakallah.